Okay, so in today's class, what we are going to see, I'm going to run this code, going to open the Anaconda prompt, and in this Anaconda prompt, I'll have this basic address, base address denoting C users and search in. So I'm going to run this Python app.py, hit enter, and it will lead to some local address, like local this one IP address. So can you see heart disease prediction? So if I'm having 50.5 and 5, so I'm going to predict percentage with heart disease 5.79, right? So this is the web-based prediction, and we are going to do this project in our class today. How to deploy any project, any prediction part using HTML web page, right? So I'm going to show the exact web page, exact web API where I have created this one. If I'm going to open, yes, this template, inside this template I'm having index.html file, or index.html file I'm having uh, this notepad. Okay, so if I'm not going to open with notepad, Google Chrome, right? So Google Chrome will open my sheet. If I'll go to the uh, like view page source, you will find my HTML web coding, right? Can you see this? If you have basic idea about the coding or any other uh, uh, I mean code you can add, right? I have added this H1 style techlang project 1 heart easy prediction as a this one heading part, H1 H2 and all. This form is having form action URL we are going to predict. I'll explain one by one every attitude means attribute described here, but let me go for the prediction part first. So this is the secondary part, right? And we can deploy any project, any prediction part, any machine learning data science project over the index.html file, right? If you want to deploy, if you want to give the access to another, to your friend, to your family members, to your teacher, so you can give this HTML web page URL, and they can predict something else, right? So this is a kind of another project, like any prediction project, and I'm going to open this one, right? So now I'm going to open this one. I'm going to open this new Python file, right? So let me switch off this so that I can have better bandwidth. Okay, so am I audible? Yes, sir. Hmm. So inside this HTML web page, I'm having one another data set which is called. So I'm going to import PD, import pandas as PD, and inside this code, I'm going to, let's say, data is equal to PD dot read underscore CSV, and inside this CSV file I'll have to give the heart disease CSV. This is my data set, so I'm going to copy heart underscore data. So heart underscore data dot CSV, and this is storing all my data set. So our expectation in realistic manner to check the head of this first part of this data set. So the unnamed means like the how many candidates we have, biking, with whether they are having the biking habitual, they have smoking habitual, and what is the probability they will have heart disease, right? If you will check the data set for the data dot tail, so
we will use data.tail, and you will find last five records for the biking, smoking, heart disease, and so on, right? So let me open this train.py file and then come back over here, right? So here we have this the another data set also, and I'm going to import another library called cborn as SNS, right? And then for the numerical problem, I'm going to use numpy as np, right? So this is the prediction part. This all these library will be used for prediction part, and the drawing the attention of prediction model and the biking and heart disease for my target column. So here we have features. Biking, smoking are the features of patient, but heart disease is the probability. Like if he is having high biking and smoking is like this one 21 something, so he is having heart disease of this probability, this one. If the someone is having 30 or 23, so like, so he is having 11 point something heart disease probability, right? So in this way we have def, let me import the file again, read underscore csv. If any one of you have any doubt, kindly comment me or me ping me out, like sir we have this doubt, else I'll keep going to write my prediction part, right? So df dot pd dot df is equal to pd dot read csv will encompass or consist all my data set, consisting of my data set, and then I'm going to print. In either way I can go for print df or my data set itself, right? You can go for df dot head again, right? So you can see this is the output of my first records, right? Similarly I'm going to remove the first column. So what I'll do, I'll going to drop, because the first column is the numerical one, and if you'll go down 498 497, it will have higher priority for my prediction, which I do not want. So in real life example, go for the mathematical calculation. It seems the person who is stored at 497 index number, having 498 value and these two features, so which means having highest priority among all, which is illogical, which is totally wrong. So breakdown of this entire wrong prediction, we are going to remove this or drop this column. So if you want to drop any other column, not in this case study, in either case study, किसी में अगर आपको नाम नहीं चाहिए, जैसे किसी के एम्प्लॉय का नाम का कोई रोल नहीं होता है, अगर आप किसी के एम्प्लॉय की सैलरी प्रिडिक्ट करना चाहते हो तो उसके नाम का कोई रोल नहीं है, राइट? लाइक आपके मार्क्स कितने आए फाइनल मार्क्स में, इसमें आपके नाम का कोई रोल नहीं है, राइट? आपके क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स के आप मार्क्स प्रिडिक्ट करना चाहते हो, और मार्क्स के बेस पे आप ये फीचर्स लोगे कि वो कितने आवर्स पढ़ा, कितनी कोचिंग्स करा, कितने सब्जेक्ट्स में उसने ऑप्ट किए हैं, कितने वो ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करता है, बट उसके नाम का कोई रोल नहीं है। उसकी एज क्या है ये हो सकता है, उसको कितना एक्सपीरियंस है ये हो सकता है, बट उसके नाम का या आधार कार्ड का कोई रोल नहीं है, राइट? उसके मार्क्स प्रिडिक्शन करने का, राइट? So this is the reason we need to drop some value. So I'm going to drop this unknown, I'm going to copy this column here, and along with this column I'm going to access is equal to 1. So when you go for the access is equal to 1, which means I'm having column wise. If you write access is equal to 0, which means row wise data set, you don't need row wise, but we are going to delete column wise. So this is how my final data set look like. So first two columns are for features, and last column is for like this one for prediction one only, right? So I'm going to plot sns dot lm plot, and I'm going to go for x. The first is the biking,
and the second column on the y-axis I'm going to predict the heart disease value, right? So inside this heart disease I'm going to take my data column, right? Let me run this column. Can you see the relationship with the biking and the heart disease showing using scattered plot? This is called scattered plot. And for this scattered plot, in order to draw this scattered plot, I need this SNS library. So this SNL library I had imported in the above code, so that I'm having alias name for the SNS uh, Seaborn, right? So for this, I'm having x-axis along the biking and y-axis the heart disease column, right? If you want to check the relationship, right, you can see there is some relationship. If I'm going to the down for the biking, the heart disease probability is of course low. Can you see this relationship? Everyone can see this relationship. If Yes, sir. anyone Yes. having a low biking, like he is driving for low kilometer और बहुत थोड़े टाइम के लिए वो बाइकिंग करता है या जीरो बाइकिंग करता है, उसको बाइसाइकिल चलाने की आदत नहीं है, so they are moving towards heart disease high probability. So let's take a moment to discuss this relationship graph. Interview may ask the relationship, and can you see the line in between? This is called linear regression, which we discussed in the previous project. The linear regression. I'll explain the mathematical background also, but first understand the graph. What is the story behind this scattered plot, right? If I want to create the this is the first feature, biking, and what are the second feature? That is the smoking. So let me copy this smoking and replace with biking only, because I need the same scattered plot. And uh, not showing. Okay, let me, okay, let me make it comment. Yeah, okay, it's not showing. Maybe some either conflict is there with the biking and smoking, so it will plot in some case in some couple of minutes, right? So let's take the another part. This is the training part for my data set. So I'm going to drop again for my, in order to take the heart dot DISEASE disease, and along with the axis is equal to 1, right? So this is the x, like training part only, consisting features only. And when I extract the x definition, so I'll having xdf, and with this df part I'll extract the heart disease only, right? So I'm going to separate x underscore df, the feature part, all the features part are consisting of same data frame, and when I talk about the target value, which is consisting in ydf, in a separate column, separate data frame. So you can go for the different part, and the same process we done in the previous projects also. We are separating features and the target columns similarly. So let's brainstorm some possible solutions together. Can we go with the same features and target column along wise? No, concurrently we cannot go for the same. हमें उनको अलग अलग ही करना होगा. Now for the prediction part we need sklearn dot model underscore selection. I need to import train underscore test underscore split, right? So this is the predefined formula for train, test, and split. So first I'll take x train, and then I'll take the x text, and then I'll take y train, and then I'll take y test, right? So just wait, I'm couple of seconds coming back.
So this line will split my entire data set into four pieces. So I'm going to deploy this train, test, and split, and within the split I'm going to define my training data set and the testing the column target data set within the size test size is equal to 0.3, that is the 30% of my test data set, and random underscore state should be is equal to 42. I'll explain one by one what are these values. Let me run this code first. Train test split sp oh my mistake split, right? Now you can see x underscore train dot shape, right? Can you see this one? Okay, let me add one more thing. Df x under df dot shape, this is the shape of data frame, original data frame shape. I splitted four parts. I split this data set into four parts, right? So now I'm going to check y train dot shape, right? Y, oh, it's a small y, right? This is the 348, right? Again, I'm going to check x train and y x test and the y test shape. Going to copy this one and check for x test and y train test, right? Now can you see if you'll add 348 plus 150, so it's around 498, which is equal to original data set. Now you can see this 348. Okay, so let me open my paint brush. So inside this page paint I am having original data size of this one and this one, right? I'm going to split it this one also, right? Right now this entire piece, right? If I'll go for this entire data set, it is of 498 comma 3. The size of this data set is of 498 of 3, right? Which is written over here 498 comma 3. Now 348 150 150, I'm going to copy this one, coming back here and test this one and this one, curve V. So this is 348, going to cut this part, and here also 3 150 comma 1, right? 150 comma 1, and here we have 150 comma 1, right? Now you can see this part is something, this part is 30% of entire data set, right? Similarly, if you check this part is something 70% of my entire data set, right? And this is the training data set. Sorry, this 30% is going for training, testing, and the below 70% is for training, right? Now can you see the four pieces of this my entire data set? शुरू में मेरे 3 कॉलम्स जो थे, ये वाला जो पार्ट है इधर का, ये टारगेट कॉलम है हार्ट डिजीज का, और ये वाला है बाइकिंग और स्मोकिंग का, राइट? सो अब इस पूरे डेटा सेट को मैंने क्या करा, पहले दो पार्ट में डिवाइड करा, मैंने कॉलम को अलग कर दिया, मतलब टारगेट वैल्यू को अलग, एंड ट्रेनिंग डेटा सेट को अलग कर दिया।
Then I divided this 498 into 30%, 70% using this code, right? ये जो 0.3 यहाँ पे वैल्यू दी है, if you'll give 0.2 or 0.2, which means you are dividing this data set into 20% and 80% ratio. So further to our conversation, we are going to divide entire data set into 30 to 70% ratio. Am I correct? Anyone please acknowledge? Are you getting my point? कि 498 रोज को हमने 150 में और 348 में जो डिवाइड किया है वो टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए किया. एनीवन कैन एक्सप्लेन कि ये 34 48 और 150 कैसे जाएगा मॉडल में बिफोर. हम्म. 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 यस. हम्म. So why I'm calling into this data set is divided into four pieces. How? वन फॉर ट्रेनिंग वन फॉर टेस्टिंग, राइट? तो ये तो दो ही पीस हुआ, फोर पीस में कैसे हुआ डिवाइड? फोर पीस में ऐसे हुआ कि ये जो इधर वाला आप पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पार्ट केवल फीचर्स को ले रहा है. हमने इनिशियल में फीचर्स के जो कॉलम है उनको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर अलग कर दिया है. जो ये फीचर्स देख रहे हो आप एक्स डेफ, राइट? और जो जो आपके टारगेट कॉलम्स हैं उनको अलग कर दिया है, राइट? तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक्स डेफिनेशन और वाई डेफिनेशन को पास किया है, डीएफ को पास नहीं किया है. विच मीन्स एक्स डेफ डीएफ कंसिस्ट ओनली फीचर्स एंड वाई डीएफ कंसिस्ट ओनली टारगेट कॉलम. तो मैंने पहले एंटायर डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड करा, फीचर अलग और टारगेट कॉलम अलग, जो हमें प्रिडिक्ट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू. अब उन दोनों को मैंने फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेन एंड टेस्ट, which you illustrate just now. Are you getting my point? ये चीज सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स में आएगी और हर जगह आप कहीं पे भी जहां देखोगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉलम, द सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग डिप्लॉयड एवरीवेयर. सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपने इसको समझ लिया, आप ये समझ लो आपने सारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स को और एल्गोरिथम को समझ लिया. Right? Now let's take a closer look at this further part. We are going to sum up 348 150, which is the like addition part, right? Now I'm going to define the model itself, एक algorithm जो कि हमारे इस data set को train करेगी and then predict करेगी. So I'm going to define one another library which is called sklearn. From this sklearn, I'm going to import linear model which we have already learned about the linear model. So from this linear model, I'm going to define courtesy linear model dot linear regression object, and this instance will will store in the model variable, and we are going to call this fit model, right? So let us call fit method to train the model using independent variables, right? Anyone can explain what is the independent and dependent variable? Yes, like the heart disease is dependent, so dependent upon biking and smoking. अब बाइकिंग और स्मोकिंग जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, राइट? So we are going to train
using fit model and going to model dot score. Inside this score I'll keep xtrain and the white train, right? So this fit model will learn the model, and so with the independent variable we are going to predict something, and it's going to predict the R2 square value, a measure how well it is going to predict, right? Now I'm going to check the prediction underscore test, and within the underscore test I'm going to predict model with this model dot predict, and we have x underscore test, and this is the another piece of partition x test. So I had checked x train and y train. Now I'm going to predict the x test only. Hit run, and I'm going to print this prediction test here along with the y test value. Can you see this one is having this value, right? Y test and the prediction, right? So something something 4.75 and the 9 point something, or the different values, right? Now I can import pickle. So pickle is the another library we can use for the deployment, and with this pickle I'm going to uh, store my model using dump function. It requires three parentheses. First is model itself, and the second and third is what is the name of this, like model dot pkl. You want to store this model using pkl, and the authority, like the access point, you want to write back, you want to read back every model consist and so on, so you want to store this one. So pickle, all right. So I'm going to use this model itself. Now if you will see, if you will check this one inside my right Jupyter Anaconda, this pickle model has been stored, right? So this will consist all my prediction model and all my this training and testing. अब आपको बार बार इसको ट्रेनिंग नहीं करना है, बार बार इसको टेस्ट नहीं करना है. You have this operations, linear regression model, and that's it. It's stored in the image format in your local machine. As you can see on this slide, you can have this model.pickle in your local machine. You can download it and you can use anywhere, right? आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो, आप किसी को भी दूसरे टीचर को दे सकते हो, या किसी और को बोल सकते हो कि भाई मैंने ये काम किया है, अब इसके बेसिस पे आप क्या कर लो, आप यूज कर लो, अपना प्रिडिक्शन कर सकते हो, राइट? उसको अब ये पूरा जो है उसको ना तो कोई भी डेटा सेट चाहिए, ना कोई उसको ये ग्राफ बनाने की जरूरत है, ना उसको स्प्लिट करने की जरूरत है, ना ट्रेन करने की जरूरत है, ना टेस्ट करने की जरूरत है. नथिंग प्री प्रोसेसिंग steps required. This entire process is encapsulated in a single file called model.pickle. PKL is the format, right? Now I want to import this model. How to use this PICKLE? I want to use this model for further use. So I'm going to load, and within the load I'm going to model PKL, open this model PKL, and want to print something model dot predict, and inside this predict I'm going to give some value 20.1 comma 56.3. Hit enter. Okay, now I've given the read PIPK open. Okay,
this is RB. 10 out of input. I'm going to import. Did I run this code? Model dot pkl pkl load open. Let me write this file. Okay, might be some it's writing the file or picking somewhere else. Okay, can I use this now? This is ran out of input, right? Might be some issues, but this is the code where you can predict the entire value, or you can go for the entire images, right? Okay, now go for the next file, that is the this one, app.py. Anyone having any doubt? Anyone? Okay, so moving ahead, this app file, which is the this one, request.app file, and Flask, which is the web portal, and web condition we are going to import. And inside the web condition we can go for the uh, Flask, import Flask, right? We are going to request and render template. So this render template will use the template file, and I'm going to use this create an app using the Flask class. This is the Flask class, right? And the function itself it is going to define here. Now the same thing I'm going to load the train model, model.pickle, the same code I have used over here, model.pickle, right? Maybe it will take time, some run out of input, what is the code here, right? So but here it will work certainly. It will load the model which I have stored inside the local machine. Now you can define this app. This app will take the root. So root का मतलब क्या है? The local home page, right? क्योंकि मैंने जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का वो लिया है, वो इस app.api पे ये फाइल ली है, राइट? और इसके साथ में ही जो है मैंने ये टेम्पलेट्स दिया हुआ है, इस टेम्पलेट्स के अंदर है मेरी index.html, राइट? सिमिलरली ये मेरा जो नेक्स्ट है मॉडल्स, तो मॉडल्स के अंदर है वो फाइल model.pkl, राइट? तो अब होगा क्या, जब यहाँ पर आप देते हो स्लैश, विच मीन्स कि ये लोकल मशीन को देख रहा है index.html को, राइट? रेंडम टेम्पलेट मतलब टेम्पलेट फोल्डर के अंदर देखेगा, राइट? बट व्हेन यू सी गिव पाथ एज ए स्लैश प्रिडिक्ट, तो स्लैश प्रिडिक्ट के साथ में क्या देगा, ये प्रिडिक्ट फोल्डर को सेम लोकेशन पे ढूंढेगा, और प्रिडिक्ट के अंदर में ये क्या करेगा, मॉडल्स की वैल्यू लेकर के आएगा, लाइक models.pkl, right? Similarly you can give the methods and float value. So uh, integer features float. So what happens, जब कभी भी आप कोई फ्लोट में स्ट्रिंग में वैल्यू देते हो किसी भी उसमें, जैसे कि आप जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रहे हो 50.5 और 5, तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, दे आर इन दी स्ट्रिंग फॉर्मेट, राइट? So we are going to take input from the web browser से हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो इनपुट जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट है. So we need to convert a string into the float format. You can do using string float x, और अगर आप इसको इंटीजर की जगह मतलब फ्लोट की जगह इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, then you can use this integer x. So all the values will be converted into integer format only. So means अगर आप यहाँ पे 50.55 लिखते हो, like 50.142 लिखते हो और 5.345 लिखते हो, तो ये जो प्रेडिक्शन होगा ये केवल राउंड ऑफ वैल्यू के लिए होगा, मतलब 51 और 5 के लिए ही होगा, because you have passed the typecasting as a integer value. But if you are writing float in a single line here,
जो कि सारे टेक्स्ट बॉक्स में प्रिडिक्शन के लिए जा रहा है, फीचर्स वैल्यू के लिए, तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? नाउ आई नीड टू कन्वर्ट इनटू द एरे बिकॉज आई नीड द कैलकुलेशन पार्ट। आई कैन नॉट गो फॉर द लिस्ट। लिस्ट में मैं किसी को भी उसमें कैलकुलेशन में नहीं जा सकता, राइट? कैसे नहीं जा सकता, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास है एक L1 इज इक्वल टू 5,4,1, राइट? सेकेंड लिस्ट है आपके पास में 10,14,20, right? And going to wrap this one and hit run. So L1 plus L2. Anyone can guess what is the output of this L1 plus L2? Our first point of discussion is we are converting every list element into the np.array. So for this reason, I have created two L1 and L2. Anyone can explain what would be the output of this L1 and L2? If I run this code, इसका output क्या आएगा? हाँ, 15, 18, 21. Can you see the output? Can you see this one? It's not the addition at all, right? ये इसने एक के बाद में एक को ऐड कर दिया, which means concatenate कर दिया, right? Right? But अगर मैं यहाँ पे कट सी कट वी np डॉट array लिखता हूँ, और let me check whether it will work or not. Cut v, right? Now cut c. Can you see now? Now addition is going to perform over here. अब जब मैंने np डॉट array को numpy में कन्वर्ट किया इन दोनों लिस्ट को, then only I am getting the desired output. Can you see the difference? Right? So let's talk about any issues if you are having like difference between list and numpy array. So हमने हर लिस्ट को numpy array में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ. Let me go for L1 multiplied by 5. Anyone can guess what is the, okay, so I'm going to run this code again. अब मेरा L1 में एक लिस्ट है, L2 में एक लिस्ट है, राइट? क्योंकि मैंने इस कोड को दोबारा से रन कराया है कमेंट को. So now L1 asterisk 5. Anyone can explain what would be the output of this command L1 asterisk 5? किसी भी लिस्ट को asterisk 5 हम करते हैं, so what would be the output? Does it have one? Does anyone have any answer? Okay. So any guess? देखो L1 की अभी वैल्यू क्या है, 541, बट L1 asterisk 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 25, 20 एंड 5, यही तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के हैं. नाउ सी, ये क्या कर रहा है, राइट? L1 की जो एस्ट्रिक वैल्यू है, मतलब 541 है, उसको वो 5 टाइम्स लिख रहा है, विच वॉज दी अनएक्सपेक्टेड. कैन यू सी? ये छोटे छोटे स्टेप्स पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आपको ये चीज आ गई ना समझ में कि आप हर चीज को numpy डॉट array में क्यों रैप कर रहे हैं, अगर आप कोई भी इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, कहीं पे भी कोई कोड देख रहे हैं, एवरीवन दे आर ट्रांसलेटिंग इनटू दी np डॉट array. सो और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, सो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, आप बड़े बड़े कोड को भी समझ सकते हो इफ यू नो द बेसिक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट, राइट? अब अब आप देखो कि यहाँ पर मैंने अब इस कोड को रन कराया, ठीक है? अब इस कोड को रन कराने से क्या हुआ, मेरा जो L1 है विच इज टाइप कास्टिंग हो गया एरे में, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, L1 एस्ट्रिक 5 लिखता हूँ. नाउ कैन यू सी, L1 जो 541 है वो क्या दे रहा है, 25, 20 और 5. नाउ दिस इज द करेक्ट आउटपुट, राइट?
एक और एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू रन दिस कोड अगेन, नाउ L1 L2 consisting this one, right? Now L2 minus L1, can anyone explain कि L2 minus L1 क्या करेगा? So let's review our progress till now. Let's run this code. Can you see? This is unsupported operand types of list and list. ये list और list को add नहीं कर, मतलब subtract नहीं करेगा, right? कुछ भी ये ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, राइट? लेकिन अगर यही मैंने इसको टाइप कास्टिंग करा इनटू द नंपाई एरे एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म L2 माइनस L1, नाउ आई एम गोइंग टू रन, कैन यू सी? अगर मैं L2 कॉमा L1 को सॉरी अलग अलग प्रिंट करता हूँ, सो इट्स कंसिस्टिंग ऑफ 10 14 20 5 4 1 respectively. In the next code, I am going to subtract. So 10 minus 5 is 5, 14 minus 4 is 10, 20 minus 1 is 90. Now is it okay? So let's make sure to keep this uh, concept very clear in your mind that we have to convert everything into the numpy array, क्योंकि numbers इन पाइथन में यही ऑपरेशन कमांड जो है हमारे, जो हमने बचपन से मैथ्स में सीखे हैं वो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. This all means this entire line features is equal to np dot array integer feature. और integer feature क्या है? ये जो ऊपर हमने लाइन किया है, और ये लाइन क्या है? ये वो सारे फीचर्स वैल्यू हैं जो आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स से लेते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दूसरा अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, सो इन दैट प्रोजेक्ट यू मे हैव मोर देन टू टेक्स्ट बॉक्सेस. आपके पास हो सकता है 6 कॉलम्स हो, 8 कॉलम्स हो, राइट? फीचर्स हो, उन सब की वैल्यू आप ले रहे हो, तो आप क्या करोगे? उन सब की वैल्यूज को पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट दिस HTML पेज जो है वो स्ट्रिंग में वैल्यू लेके आता है. और फिर आप क्या कर रहे हो? उसको numpy एरे में प्रिडिक्ट कर रहे हो, मतलब कन्वर्ट कर रहे हो. नाउ वी आर गोइंग टू पास दिस इन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फीचर्स. सो प्रिडिक्ट इट वाज, प्रिडिक्ट इज द प्रिडिक्शन लोड, जो हमारा प्रिडिक्शन लोड होने में हमारा यहाँ मॉडल में काम आ रहा है, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू राउंड दिस प्रिडिक्शन मॉडल. फर्स्ट टू मॉडल के लिए हम डेसिमल के बाद के टू पोजिशन के लिए हम यूज करते हैं राउंड दिस वन, राइट? अगर मैं यहाँ से ये फंक्शन कॉपी करूँ और यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊं, तो मैं जैसे मान लीजिए लिया 40.5 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? आई एम गोइंग टू रन दिस वन. कैन यू सी 40.24 showing on the screen? अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 4 करता हूँ, now you can see after decimal I'll get 4 positions, right? So this is the functionality part of round function only. तो इसको बहुत ज़्यादा डेसिमल के बाद वैल्यू ना लेने की वजह से सिर्फ राउंड फंक्शन ये लेगा. and then it's seeking for the template index.html and the prediction not predict परसेंटेज विद हार्ट डिजीज इज दिस वन. तो ये जो लाइन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए, परसेंट प्रिडिक्ट विद हार्ट डिजीज, परसेंटेज विद हार्ट डिजीज, ये लाइन जो यहाँ लिखी हुई है, राइट? एनीवन फाइन विद दिस लाइन, विद दिस फाइल? और यहाँ पर जो app.api है वो आपने सेव करा हुआ है, राइट? और दूसरा जो पार्ट है वो हम देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको फिर से क्लोज किया. I'm going to run this code again like anaconda, and inside this prompt command you will have this by default C user Sachin, right? अब आप चाहते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहीं और है, इस सेम फोल्डर में नहीं है. कहाँ पर है? मेरा है सी के अंदर में, डी में, और डी के अंदर में टेकलांग फोल्डर में है, फिर AI विद मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में है, देन प्रोजेक्ट 6 फॉर API वेब, और इसका जो फाइल लोकेशन है, स्केलेटन है, वो कुछ इस तरीके से है. सो हाउ वुड यू लीड टू दिस पॉइंट? सो यू जस्ट गो टू द URL in your local machine, cut C, copy this URL, go to the
डी ऑप्शन, राइट। सो डी कॉलम जैसे ही आपने करा, यू विल जस्ट गेट आउट फ्रॉम योर सी ड्राइव। अब डायरेक्टली आप सी ड्राइव से बाहर आ जाते हो, राइट। नाउ यू गो टू हिट रन cd स्पेस कॉपी दैट लोकेशन जो आपने अभी वहां से लोकेट की है। सपोज किसी का है डी हेमा ऑब्लिक टेकलांग ऑब्लिक प्रोजेक्ट 7 ऑब्लिक इमेज एपीआई एंड ऑब्लिक वो जो भी पाथ है आपका, वहां से आपने कॉपी किया and you just give cd space this one and hit enter. Now can you see, previously the prompt was showing c user sin Sachin. Now this base address is d techlang ai machine learning project 6 python 6 web api. So what is the benefit of this address? अब आप के लोकल मशीन पे कहीं भी ये सारी फाइल्स है, लेट्स से इन द डाउनलोड फोल्डर, तो आप डाउनलोड फोल्डर का यहाँ पे डायरेक्टली पाथ दे सकते हो। और फिर ये पाइथन स्पेस ऐप डॉट पी वाई की फाइल जो आप देखो यहाँ पर मेरी ऐप डॉट पी वाई यहाँ पे है स्टोर, यू कैन रन दिस फाइल सिमिलर इन आइदर वे, राइट। So let's talk about any issue that you have come up since the code initialization and every part. Ping me or me, write it down in the message box. You will find this link. I'm going to run this code. You will find this TechLang project 1 and the percentage part and the 5. I'm going to predict the heart disease. This is the 5.87. Now, one more thing. If you go to the templates folder, go to the index file, open with, right? अब मुझे कोई बताए कि इसमें आपको एक लाइन हेडिंग ऐड करना चाहते हो, क्या हेडिंग करना चाहते हो बताओ मुझे। एनीवन स्पीक अप so that I can add this header file in my web page. Hello everyone, right? Yeah, right. Which line you want to add in your web application, web portal? Okay, disease prediction by Sachin. I'm going to add this line. Can you see? This is the H1 heading and using color wallet, and the inside this, after these two headings, I'm going to add the third header, right? I'm going to save this one and close this one, right? Coming back to the prompt part. So अभी मैं क्या करता हूँ, इसको close करता हूँ। अब वापस से मैं अपना anaconda prompt open करूँगा and then by default it will show C user Sachin. I'll go to the cd dot dot, you can go just directly above cd dot dot this directory above and d colon, you will go inside the d directory. अगर आपके e में है तो आप e colon लिखोगे, आप e के में मूव कर जाओगे। अगर आपके में f ड्राइव है तो आप f colon, you will move to the f drive itself. Now inside the D column, I'll write cd space, oh, the address of my this one folder, cut C and paste and hit enter. You can see now I'm inside the D Techlang AI machine learning project 6 web API. Now I'm going to write Python then app.py. It will give the URL local machine. Can you see disease prediction by Sachin? This is the line just we added. Anyone acknowledge this one? Right? तो मेरा पर्पस क्या है इस लाइन को दिखाने का, कि आपको अगर यही मतलब ये नहीं है कि अगर सर ने ये बताया है तो बस यही मुझे चाहिए, देखो केवल एक लाइन थी अब दो लाइन ऐड कर दी, नहीं। इफ यू वांट टू ऐड एनी बैकग्राउंड इमेज इन योर एचटीएमएल वेब पेज, अगर आप प्रिडिक्शन तो कर ही रहे हो तो आपको पता है कि ये वाला जो ऐप है ये फाइल ऐसे ही चलेगी, ठीक है, ये वेरिएबल को ऐसे ही लेगा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर जो प्रिडिक्शन पार्ट है वो अभी
दो कॉलम के लिए है तो आप दो कॉलम की जगह चार और छह कॉलम भी ले सकते हो फॉर अनदर डेटा सेट ऑल्सो, राइट। आपको ये भी पता है कि जब आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की कोड में यहाँ पे जाओगे और इसमें अगर आपके व्यू सोर्स में, व्यू पेज सोर्स में जाओगे, तो यहाँ पे जो कंटेनर है, जैसे ये पार्ट है फ्रेम आईडी का या जो भी है, वो पार्ट में आपको कैसे ऐड करना है आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो उसके अलावा अगर आपको कुछ भी हेडिंग ऐड करनी है, राइट, कुछ भी आपको इमेज ऐड करना है, कुछ भी आपको दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेके आना है, जैसे आपको इंस्टीट्यूट का नेम ऐड करना है, आपको अपने मेंटर का नेम ऐड करना है, आपको अपना राइट हैंड साइड में लिखना है प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद या जो भी है एंड रोल नंबर दिस वन, तो आप उसको कैसे करना है, ये मेरा पर्पस था, राइट। आप अगर इस प्रोजेक्ट को वहां दिखाना चाहते हैं डिप्लॉयमेंट पार्ट में, राइट, आप उस पिकल की फाइल को कैसे इंपोर्ट करके कैसे आप वहां पर पहुंचा सकते हो, राइट। एनीवन हैविंग एनी डाउट?